ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So welcome everyone to the evening session of the book reading Vaishnava Etiquette written by Param Pujya Bhakti Swami Maharaj. We were reading the fourth chapter of it and we'll continue with that. Anyways, I'll just recap what we read earlier. यहाँ से पढ़ते हैं. Our dealings with others must be very clear. Srila Prabhupada letter to Bali Mardana, February 22, 1970. Anyway, do things in good sense without any disturbance. We have to make progress very soberly, and I am always at your service whenever required. Therefore, a serious devotee is always ready to take guidance from superior other Vaishnavas to understand the proper way of acting. Srila Prabhupada letter to Satyaswarup, August 19, 1969. But we should never steal anything like money, food, water, gasoline, etc., just to enhance our service to Krishna. That is too much dangerous, and if we are caught, then all of our work is finished. Just like in India recently, the Bal Yogi Guru Maharaj Ji was detected by the customs authority attempting to smuggle some small items into India. By this one tiny incident, his entire effort of preaching, even he is rascal number one, and his preaching is nonsense. Even so, the example is there, his work is ruined now, and he is practically finished. As the government will not grant him a passport to leave India, so we shall always be careful to avoid any kind of jeopardizing our high standing in the society by some foolish and small act of illegal stealing. Srila Prabhupada to Sankarshan, December 31, 1972. No salaries. The teacher and the pujari should never receive a salary. They must work in pure devotion. The Kshatriya also. Lilamrit, Volume 5, page number 65 and 66. Vaishnava behavior is inspiring for everyone. Chapter 5, Vaishnava behavior is inspiring for everyone. Humbleness is appreciated. Srila Prabhupada letter to Janardhan, January 21, 1968. This Krishna consciousness movement, through music, philosophy, spiritual culture, and personal behavior, culminating in ideal character of the devotees, all these heavenly contributions combined together will certainly bring about a major change in the life of the Western people. You are right. We must all become ideal in character, and then people will become very impressed with such purity. A devotee is faultless, he has no flaws. But on the other hand, if we don't follow, it is nice that we are doing preaching work there, but you should know that that such practices like stealing are against the principles of Krishna consciousness. I always want that my students should be very ideal in character and do not discredit our society. It is very good you have received permission for chanting and distributing literature as well as collecting. Now you should concentrate, develop your spiritual power to attract the fallen souls to Krishna consciousness. The daily regulative duties must be performed by everyone very strictly. The beads chanted 16 rounds and our literatures read and discussed. In this way, everything should be done very nicely. Sankirtan should be done by you in the streets and the gatherings and in the manner display what is the Krishna consciousness movement and how it is for everyone's eternal welfare and happiness. So you do all of these with great enthusiasm and very carefully. Our all activities must be open
so that no one may criticize our mission. So all dealings must be to the standard of Vaishnavism. We cannot misrepresent ourselves for the purpose of taking monies from the public. But as everything is undertaken forthrightly in the Krishna conscious way, then Lord Krishna will be pleased to provide all facilities for aiding our such sincere service. Srila Prabhupada, letter to Sridham, July 8, 1970, Etiquette with Relationships. मतलब प्रभुपाद अपने लेटर्स में सबको बहुत सी चीजें समझाते थे. नाइस. अभिषेक प्रभु आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. Hare Krishna. Chapter 6, Etiquette within Relationships. The Vaishnava society is very meticulously structured, where the juniors always respect seniors and juniors always receives affection and blessings from the seniors. The Vaishnava society is structured according to Varnashram, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and sannyasis, Vanprasth, Grahast and Brahmachari. There are considerations of seniority according to initiations among God brothers. Devotees who have received initiation earlier are considered senior. The Guru's God brothers should be respected as the Guru. Sannyasis should always be respected as the Guru. In a Vaishnava society, everyone tries to become humble. The very advanced one is the more humble he becomes. Sometimes senior Vaishnavas may offer respect to a junior Vaishnava due to his humility, but a junior Vaishnava should never think that he deserves that respect from all senior Vaishnavas. On the other hand, when a senior Vaishnava offers him respect, then the junior Vaishnava should feel extremely embarrassed and repeatedly pray to Krishna that he receives the respect. One should always remember that his business is to become more humble than the blade of grass, more tolerant than a tree, and desiring no respect for himself. He should offer all respects to others. Transgressing of Vaishnava etiquette will undoubtedly destroy one's spiritual life. Never take sides when there is a disagreement among senior Vaishnavas. Stay neutral because the quarrel among the Vaishnavas is a kind of pastime and beyond our understanding. Point 11, disciple should always respect his guru as God. Point 12, preachers should have compassion upon the innocent souls but avoid offenders. Quotes from Srila Prabhupada. Use of titles. One thing you must note also, as a matter of etiquette, the spiritual master is addressed as His Divine Grace. A God brother is addressed as His Grace, and any sannyasi is addressed as His Holiness. Dealing with God brothers. Definition of Prabhu, Srila Prabhupada. You should not just use it mechanically, you should meaningfully apply it. Yes, to call one another Prabhu is all right, but not to become Prabhu. Just accept others as Prabhu and remain as servant is the idea. But because somebody is calling you Prabhu, one should not become a Prabhu and treat others as servant. In other words, everyone should feel himself as servant and not to think himself Prabhu because he is being called Prabhu. This will make the relationship congenial. A practical definition of Prabhu, Ralph Waldo Emerson, who is quoted on his jacket cover of all English editions of Bhagavad Gita, said, "Every man I meet is my superior in some way. In that I learn from him. To serve the spiritual master means also to serve his disciple. Regarding serving your God brothers, there is very good practice. The spiritual master is never without followers. So to serve the spiritual master also means to be the servant of his disciples. When you want to serve the king, you must also serve his ministers, secretary, and everyone who serves him. And to serve his servants may please him more than to serve the king personally. Srila Prabhupada letter to Sivanand. But on the other hand, why Day3 should have a servant? God brothers are not
meant for being servant. Without a spiritual master's order, nobody can utilize the service of a God brother as one's personal servant. We address each other as Prabhu. So how we can engage our God brother as servant? Lord Chaitanya Mahaprabhu engaged Govind Das, who was his god brother, as his servant, but that was only on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu's spiritual master. Srila Prabhupada letter to Kirtanand. I understand that your god brothers are as your younger dependent brothers. Kindly treat them as your younger dependent brothers and try to advance them in Krishna consciousness as good as you can. Srila Prabhupada letter to Janardhan. Please do your duty combinedly without any disruption of peaceful attitudes among yourselves. We are pushing our movement on the background of a peaceful atmosphere in the world. And if we show a little disturbance in our own camp, we that will not be a very good example. Therefore, everyone should be a forbearing, tolerant, and cooperative. Srila Prabhupada letter to Janki. But one thing is you must stop this fighting between brothers. Otherwise, the whole program will be spoiled. Yourself, Tamal Krishna Brahmanan Sattva Sarup, you should do everything combinedly. This is my request. Gradually, by Krishna's grace, we are expanding. So, if amongst us there is a friction, it will be very dangerous. Srila Prabhupada letter to Gargi Muni. This is called Vaikuntha attitude. In the Vaikuntha, actually, there is no fault in everyone, but there is another type of competition. The competition is that one devotee thinks of other devotees how nicely they are serving the Lord. In the material world, the attitude is that everyone likes to think that I am doing better than others. This is material conception. In the spiritual sky, it is just opposite. Everyone thinks that my contemporary devotees are doing better than me. We are trained to address God brothers as Prabhu, which means master. This means we shall try to find out always the serving at the side of our God brother. Sometimes there are misgivings, but we should try to overlook. Srila Prabhupada letter to Brahmana. It doesn't matter what we are, grahasthas or sannyasis. The point is to be Paramhansa, completely surrendered to Lord Krishna. Letter to Upendra. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grahast, Vanprastha, and Sannyas. These are material designation, but this Krishna conscious movement is for becoming transcendental to these material designations. And these boys, these foreigners, they are being taught in that light. Leela Amrit, Volume 5, dealing with monk prasad. हरे कृष्णा हिमांशु प्रभु आप कंटिन्यू कर सकते हैं. Hare Krishna Prabhuji. Dealings amongst grihasthas. I am so glad to learn that your good wife is also helping you. That is a duty of a faithful companion of life. If the wife is helpful in the spiritual progress of life, she is the best friend and philosopher. So in Krishna consciousness, the wife is never a burden, but she is completely a counterpart. So set example to your countrymen how younger generation can live peacefully, husband and wife, being engaged in Krishna's service. There are many examples of this type of husband and wife working in our different centers for propagating this sublime message. Srila Prabhupada letter to Vrindavan Chandra, September 8, 1969. Dealing with one's guru. Dealings, Dealing with one's guru. In regard to praying to Lord Nityanand Prabhu, I have written to you in my last letter that such prayer is quite appropriate. Our only prayer should be in the matter of desiring further development of devotional service, and such sincere prayer should be submitted not directly to the Lord, but through the via media of his bona fide servitor or representative. Notice, media is plural in number, not just one. Srila Prabhupada's letter to Madhu Madhu Dvisa, February 14, 1969. I chastise you because it's my duty. Disciple is related to discipline, so it is my duty to my disciples. Otherwise, I am not upset with anyone. I simply do this to discipline you because you are my disciples. Lilamrit, Volume 5, page 43. You may be afraid of your spiritual master, but that does not mean you should not come and see him. I will drag you to come and see me. Lilamrit, Volume 5, page 196.
Disciples should not try to instruct the spiritual master. Not knowing why Madhavendra Puri was crying, Ramachandra Puri tried to become his advisor. Thus, he committed a great offense. For a disciple should never try to instruct his spiritual master. Chai- um, Chaitanya Charitamrita Antya Leela Shai 8.21 purport. Disciples should not initiate while the spiritual master is present. The first thing I warn, Achyutananda, do not try to initiate. You are not in a proper position how to initiate it now to initiate anyone. Besides that, the etiquette is that so long the spiritual master is present, all prospective disciples should be brought to him. Therefore, if anyone is anxious to be initiated, he should first of all hear our philosophy and join chanting at least for 3 months, and then if required, I shall send chanted beads for him if you recommend. Srila Prabhupada's letter to Achyutanand, August 21, 1968. Gurus should not transgress Vaishnava etiquette and initiate their brothers disciples in good standing. I have received one letter which is very depressing from Rishikesh. I understand that he has been induced by Bon Maharaj to be initiated by him for giving him shelter, and this foolish boy has accepted this inducement. I have replied Rishikesh's letter in the following words. My dear Rishikesha, I am greatly surprised for Bon Maharaj initiating you, in spite of his knowing that you are already initiated by me. So it is a deliberate transgression of Vaishnava etiquettes and otherwise a deliberate insult to me. I do not know why he has done like this, but no Vaishnava will approve of this offensive action. I do not wish to discuss on this point elaborately now, but if you are desirous to know if you are desirous to know further about it, I shall be glad to give you more enlightenment. If Rishikesh writes you a letter, I think you may avoid reply. I do not approve of both Rishikesh and Bon Maharaj this offensive action. Srila Prabhupada's letter to Mukunda, March 26, 1968. Senior, juniors, and equals. Gunadhi, Gunadhikan Mudam Lipsid An, Anukrasham Anukrasham Gunadhamat Maitrim Samanad Anvichen Na Taper Abhibhyate Guna Adhikat one. Guna Adhikat, one who is more qualified, Mudam, pleasure, Lipsit, one should feel, Anukrosham, compassion, Gunadhamat, one who is less qualified, Maitrim, friendship, Samanat, with an equal, Anvichet, one should desire, Na, not, Tapa, Tape, by tribulation, Abhibhyate, becomes affected. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than him, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than him, he should be compassionate towards him. And when he meets someone equal to him, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Srimad Bhagavatam 4.8.34 Narad Muni to Dhruv Maharaj. Purport. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him. And when we find someone equal, we become proud of our activities. These are the causes of all material tribulations. The great sage Narada therefore advised that a devotee should act perfectly. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate toward him just to raise him to the proper standard. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. These important functions will make one happy within this material world. Surpassing a superior personality. Maryada Vyatikrama. Vyatikrama. Maryada Vyatikrama. To be well versed in the transcendental science necessitates awareness of the techniques of spiritual science. Uddhava, being well aware of these technicalities of transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Rishi to receive transcendental knowledge. Vidura wanted to accept Uddhava as a spiritual master, but Uddhava did not accept the post because Vidura was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. The rule is that in the presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even if one is competent and well versed. So Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person. Since both Maitreya and Vidura were directly instructed by the Lord,
Both had the authority to become the spiritual master of Vidura or anyone else. But Maitreya, being elderly, had the first claim of becoming the spiritual master, especially for Vidura, who was much older than Uddhava. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master for the service of the Lord. The Lord never tolerates the impertinence of Maryada Vetikram. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one's own personal gain and fame. Imper- Impertinence is very risky for spiritual realization. Respect for sannyasis. All should offer respect due to all should offer due respect to a sannyasi. His position is always superior to all other inmates of the temple. He always maintains that superior position by action and behavior. Srila Prabhupada letter to Sudama, July 29, 1972. One thing you may note as a matter of etiquette, the spiritual master is addressed by His Divine Grace, a God brother as His Grace, and any sannyasi is addressed as His Holiness. Srila Prabhupada's letter to Raya Rama, January 1, 1967. I understand that I, your god brothers are as your younger dependent brothers. Kindly treat them as your younger dependent brothers and try to advance in Krishna consciousness as good as you can. Srila Prabhupada's letter to Janardhan, January 21, 1968. Regarding your second question about greeting karmis, if a karmi is a friend, you just greet him Hare Krishna and with folded hand touch your forehead. If a karmi is a superior relative, then chant Hare Krishna and bow down to him on the ground. That should be the etiquette in our society transactions. Srila Prabhupada's letter to Arundhati, June 16, 1969. If you have any specific grievance, please let me know, but do not be disturbed by any sort of disagreement with your god brother and god sisters. Even each and every living entity is an individual soul, and as such, disagreement is quite possible in our dealings with one another. But we have to consider the central point of interest. You are both in very intelligent and sober girls, and I have got good estimation of you. Do not take at any time an attitude of non-cooperation because you have not agreed with another point. You have not agreed with another's point of view. Srila Prabhupada's letter to Yamuna Devi and Harsha Rani Devi, January 15, 1968. As superiors, we should not accept unnecessary favors for sense gratification. Srila Prabhupada to Brahmanan, February 20, 1968. Hare Krishna. पढ़िए शुभम प्रभु पढ़िए. Hare Krishna. Chapter 7. Treating women as mothers. In distributing love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu and his associates did not consider who was a fit candidate and who was not, nor where such distribution should or should not take place. They made no conditions. Chaitanya Charitamrita Adilila 7.23. First, in essence, duality means that we forget that we are part and parcel of Krishna. We want to enjoy separately from Him. We want to play the controller. This controlling tendency culminates in sex desire. 2. Man or woman concept is synonymous with material consciousness. 3. Becoming Krishna conscious means rising above duality. We have to become fixed in the consciousness that all are part and parcel of Krishna and for his pleasure, not ours. 4. A devotee's foremost duty is to transcend sex desire. 5. Fifth, this takes philosophical awareness, constant practice, and perseverance. Aversion is not the solution. Attachment or aversion are two sides of the same coin. 6. Srila Prabhupada, in the compassionate mood of the Panch Tattva, has opened the treasure house of bhakti to all classes of men and women. 7. This offers us intense and unlimited opportunity to transcend material attachment and aversion and develop transcendental realization in Krishna. 8. The bird mother generates a mood of respect and sovereignty. 9. Whenever advised that women should be seen as mothers, we mean that our dealings with women should be reserved and respectful. 10. Such conduct will minimize
Such conduct will minimize offensive mentality and dealings with other living entities. 11. Women should behave as mother. 12. In the practice of Krishna consciousness, segregation of the sexes is essential. Quotes from Srila Prabhupada. Regarding the disturbance made by women devotees, they are also living entities. They also came to Krishna, so consciously I cannot deny them. If our male members, the brahmacharis and sannyasis, if they become steady in Krishna consciousness, there is no problem. It is the duty of the male members to be very steady and cautious. This can be done by regular chanting like Haridas Thakur did. Srila Prabhupada letter to Garg Muni, September 29, 1975. Protect the women, don't exploit them. Please guide our innocent god sisters who have come to our shelter. Girls are more susceptible to the finer attachment of Maya. Boys are little stronger. Uh, Mrinalini, Mrinalini, Jadurani, and all other girls who are so qualified, good looking, intelligent, educated, and seriously engaged in Krishna consciousness should always be given protection from the attachment of Maya. Cyril Prabhupada letter to Rai Ram, October 4, 1967. Maya's most attractive feature is women and money. We Krishna conscious men have to deal with women and money in course of preaching work, and the only pro and the only uh, prophylactic measure to save us is not to accept them for our sense gratification. Then we shall remain strong enough. Materialistic people take everything for sense gratification, and Krishna conscious people take everything for Krishna's satisfaction. There is no fault in the thing as it is, namely women and money, but it becomes faulty by improper use. The improper use is to accept them for sense gratification. Srila Prabhupada letter to Gargmuni, October 18, 1969. Who has introduced these things that women cannot be chanting can that women cannot have chanting japa in the temple, they cannot perform the erotic and so many things. If they become agitated, then let the brahmacharis go to the forest. I have never introduced these things. The brahmacharis cannot remain in the presence of women in the temple. Then they may go to the forest, not remaining in NYC. Because in NY there are so many women, so how they can avoid seeing? Best thing is to go to the forest for not seeing any woman. If they become so easily agitated, but then no one will either see them, and how our preaching work will go on. Cyril एनवाई Prabhupada letter मतलब to न्यूयॉर्क है प्रभु, न्यूयॉर्क। NYC मतलब न्यूयॉर्क सिटी। जी प्रभु। मैं एक्चुअली थोड़ा ऐसा माइंड में आ रहा था जैसे हमारा बेस होता है वैसे ही कुछ होगा। नहीं ये वाला था ना, वो प्रभुपाद उवाच बुक में भी था ये वाला पार्ट, ये वाला लेटर प्रभुपाद उवाच बुक में भी था ये वाला पार्ट। ओके जी प्रभु। Cyril Prabhupada letter to Ekaini, December 3, 1972. हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रभु आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु। Vaishnava Apradhas. In Krishna consciousness, every man is so important because all of the activities of the devotee of Lord Krishna is beneficial to all living entities. Srila Prabhupada letter to Shivananda, June 15, 1969. The greatness of a Vaishnava quotes from Hari Bhakti Vilasa. 1. Devotees of Hari are very rare in the age of Kali. The position of the devotee is more elevated than the position of Lord Brahma and Lord Rudra. Text 2. The presence of a devotee at the time of death elevates even the killer of a Brahmana to the spiritual sky. Bhagavad Gita 10.86. Sorry. Bhakti Vilasa chapter 10 verse 86. If a dog eater becomes
a Vaishnava, then he becomes more elevated than a Brahmana. And if a sannyasi is devoid of Vishnu, devoid of devotion to Vishnu, then he is considered to be more degraded than a dog eater. Hari Bhakti Vilasa, chapter 10, verse 87. Number 4, even at the time of total annihilation, the devotees of Vishnu do not fall down. That is why Sri Hari is known as everywhere. That is why Sri Hari is known everywhere as infallible, all preserving, pervasive, and inexhaustible. Therefore, there is no need to fear a devotee. A devotee never inflicts pain on anyone. Bhakti Vilasa, chapter 10, verse 101 to 105. Text 5. Those who worship the Supreme Personality of Godhead Sri Hari are the best of all people, and no one is better than them in the three worlds. 10.110. Those those sinless, magnanimous Vaishnavas purify the entire creation. Therefore, they are even better than the place of pilgrimage. 10.118. 7. Those who are my devotees are not actually those who are my devotees are not actually my devotees. Those who are my devotees of my devotees are real devotees. 133. 8. My devotees who are surrendered unto me and free from attachment and disgust, envy and pride, sing my glory all the time. They never cause any harm to anyone. They are always engaged in worshipping my devotees and eager to hear about me. They are they are the ones who always carry me in their hearts. 10.145 and 146. Blasphemy of a Vaishnava. You are always alert to see whether you are committing some offense. This is a very nice attitude. In rendering service to Lord Krishna and his representative, the spiritual master, we should always maintain this fearful attitude, which means careful attention. This attitude will advance you progressively in Krishna consciousness. The Prabhupada letter to Gopala Krishna, April 21, 1970. Quotes from Hari Bhakti Vilasa. When one blasphemes a when one blasphemes a Vaishnava, he loses his religiosity, wealth, fame, and children. 10.310. 2. If one beats a Vaishnava, blasphemes a Vaishnava, shows disrespect to a Vaishnava, gets angry upon a Vaishnava, or do not express joy in seeing a Vaishnava, he goes to hell. 10.310. 4 kinds of blasphemy to a Vaishnava. 1. To find fault with a Vaishnava for his apparent low birth, to blaspheme him for his previous faults, to blaspheme him for his accidental flaws, to blaspheme him for the faults that almost rectified. From Harinam Chintamani. What do what to do if one commits Vaishnava Aparadh? If by chance one commits Vaishnava Aparadh, then he must be forgiveness from the Vaishnava, very earnestly holding his feet. A Vaishnava is merciful, so he will immediately embrace him and forgive him for all his offences. From Harinama Chintamani. Offering praise to a Vaishnava. This is actually a devotee's business that everyone could appreciate the value of others. Nobody should criticize anyone. Srila Prabhupada letter to Tapan Krishna Maharaj, August 19, 1968. Now that you have come to my house today, I have become glorified. My life has become completely successful. To be able to see a Vaishnava is as rare as the good fortune of seeing Sri Hari. I must be acquired immense pity. Thus, as the Meru mountain, that's why I got to see a Vaishnava like you. Hari Bhakti Vilasa 10.337 and 138. हरे कृष्णा Dressing like प्रभु a जी। Vaishnava. प्रभु जी आगे पढ़े चैप्टर 9 मैं में वही आएंगे। बोलने वाला था। यहीं तक रहने देते कौन हैं सा आज। चैप्टर पढ़ लिया आज तो? 3 चैप्टर हो गए आज तो। एक्चुअली चैप्टर छोटे छोटे जरूर लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट इसमें बहुत सारे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जी वो ये सब पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअली इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं पता थे मुझे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। याद भी रखना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें एक्चुअली। और दे रहे कुछ याद भी नहीं रहता है, जो पढ़े जा रहे। प्रभु जी जैसे अभी हम लोग नहीं, इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभु जी अभी हम लोग सेमिनार दे रहे हैं,
तो सेमिनार में जैसे पीपीटी बनाते हैं तो ऐसा पॉइंट वाइज लिखते हैं, जब उसका रिपोर्ट देते हैं तो वही 10 पेज का पीपीटी जो है 40 पेज का हो जाता है। तो वैसे ही है, मतलब कंटेम्पलेट करना है बहुत कुछ इसमें। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसमें। एक्चुअली तुकाराम पढ़ प्रभु दे जी रहे को हैं होना इतना सारा चाहिए। चीज को। ये एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर का एक एक घंटे क्लास से भी ज्यादा हो जाएगा ये वाला, अगर समझ नहीं जाएंगे। एक एक घंटे का क्लास भी कम पड़ेगा इसमें, एक एक मतलब चैप्टर की। प्रभुपाद हर चीज को मतलब एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। एक जगह बोलते हैं कि वुमेन से मतलब स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, दूसरी जगह ये भी बोलते हैं कि उनको शेल्टर देना भी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हरे कृष्ण राणा को मेरा एक डाउट है, मैं पूछ लूं क्या? पूछिए। मतलब मैं अभी तो रेफर नहीं करूंगा, लेकिन सपोज मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। सपोज एक वैष्णव है जो इनिशिएटेड है, ठीक है, और वो जो है मतलब उनका फैमिली लाइफ भी ठीक ठाक है, लेकिन वो अपने पत्नी को अगर थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको ब्लास्फेम करते रहते हैं और मतलब बहुत ही खराब व्यवहार करते हैं, तो उन जैसे वैष्णवों से कैसे डील करें? क्योंकि वो भी तो चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी तो सब कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे तुकाराम प्रभु जी बोलते हैं कि हमको फॉलो करना है, सब कुछ फॉलो करना है, गुरु को फॉलो करना है, सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने ब्रेन को भी यूज करते रहना है। इसका मतलब है ना कि एकदम ब्रेनलेस होके सब कुछ फॉलो करेंगे, मतलब सब कुछ फॉलो करना है, गुरु जो बोल रहे हैं सब कुछ फॉलो करना है। तो उसी हिसाब से देखें तो मैं आपको एक बंदे का मतलब बोल रहा हूँ, एक सिनेरियो दे रहा हूँ। अगर वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, इनिशिएटेड हैं, सब कुछ है, उनका फैमिली लाइफ भी है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, और रेस्पेक्ट की बात तो छोड़े, मतलब अगर हाथ भी उठा देते हैं, तो उन जैसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए? यद्यपि वो वैष्णव है, इनिशिएटेड है, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, तो वो भी तो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो उन जैसों से कैसे डील करना चाहिए? देखिए प्रभु, मेरे को तो इसका आंसर नहीं पता है। मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो हमको ये जानना है कि हमारा उनका रिलेशन क्या है। हम वो हमारे गॉड ब्रदर हैं, वो हमारे काउंसिलर हैं, वो हमारे हैं क्या? हमसे डीलिंग करना कितना जरूरी है, पहले हमको ये देखना। देखिए, कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे भक्तों सबसे जाओ, बैठो, बात करो, मिलो, बोलो। जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप पहले ये तो बताइए कि वो जो भी है इनिशिएटेड डिवोटी, उनका और आपका क्या रिलेशन है, जो ये सिनेरियो आपने बताया है? यार ठीक है, बता देता हूँ। वो एक्चुअली मेरा ही मतलब भाई है मेरे, तो मतलब भाई है, मतलब वो इस्कॉन मंदिर के पीछे ही रहते हैं वो। नहीं, मतलब मैं अब रिवील करने नहीं बोल रहा था, मैं बस नॉर्मल जो अभी आप केस बता रहे हैं नहीं, उसके क्या बारे में। रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं जो है वो ठीक है, है। जो हाँ, ट्रूथ है बोलिए वो है, बोलिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। देखिए, मेरा मेरा जो मतलब, मैं तो मेरा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, क्यों उसको मतलब छुपाना, रिवील नहीं करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि अगर आगे जाके उनके साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे मतलब मेरे खुद के भाई नहीं है, फिर भी मेरे कजिन तो हैं ही, और यद्यपि वो हैं इस्कॉन में, वो इनिशिएटेड भी हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब इवन जो मेरी इस कौन मतलब से इनिशिएटेड है? इस्कॉन से इनिशिएटेड है, वो डिवोटी है, वो हमारे साथ सर्विस भी कर रहे थे टेंपल में जब हम गए थे। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि उनकी जो वाइफ है, मतलब तो वो भी इनिशिएटेड है, दोनों इनिशिएटेड है, और उनके दो बच्चे भी मतलब, और मेरी उनकी मम्मी जो कि मेरी बड़ी मम्मी होगी, वो भी इनिशिएटेड है, तीनों इनिशिएटेड है, लेकिन फिर भी उनका मतलब वो रेस्पेक्ट देते नहीं हैं, तो भक्त के बिल्कुल समाज में मतलब। जी रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ। हमारे घर में इतने लोग नहीं जितने इनिशिएटेड हैं। एक्चुअली मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे नॉर्मली हमारे घर में भी कोई इनिशिएटेड नहीं है, लेकिन सब खुद मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उन जैसों से कैसे डील करना चाहिए, क्या मतलब क्या अप्रोच क्या होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो भी तो तो सब कुछ कर रहे हैं।
हम प्रभु ये तो कोई स्पेशल केस है, अगर ये तुकाराम प्रभु डील करें तो ये अच्छा रहेगा। हम लोग क्या बोले आप उन्हें बद जी दिमाग ब्रो। से। ये सब में नहीं एक्चुअली इसीलिए जबरदस्ती मतलब क्योंकि अपनी ये बात। देश हम लोगों ने इतना सब कुछ मतलब फिलोसफी प्रिंसिपल्स पढ़ा, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं पूछ लेता हूँ ये चीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कभी भी वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उनको ब्laspheme नहीं करना चाहिए, या हाँ, फिर तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए ना। हमें उनको, अगर वो वैष्णव हैं तो हमें उनको ब्लास्फेम नहीं करना है। उनका मुझे जितना लगता है, मैं बोलता हूँ, मैं मेरा ओपिनियन बोलता हूँ, जैसा अगर आप पूछे जी तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ। तो जी मतलब प्रभु। हमारी तरफ से वो एक क्या ही, हमको हमको क्या करना है ये वर्णन है इधर, कि देखो वो सम्मान देते हैं वो नहीं देते हैं, उसमें हम इंटरफेयर कैसे करें? वो उनका पर्सनल हो गया ना, थोड़ा उनका वो पर्सनल हो गया, फैमिली मैटर हो गया। तो मतलब हाँ समझ रहा हूँ आपका भाई है, लेकिन अगर वैष्णव के हिसाब से देखे जाए उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए उनको, उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो उनको रियलाइजेशन अपने आप आएगा कि कभी वो जैसे वैष्णव में लगा चैंटिंग करते, तो हम भी ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारा प्योर हो गया, वैष्णव हो गया तो सब कुछ हमारा प्योर हो जाएगा, ये हो जाएगा। धीरे धीरे जो भूल हुआ होगा वो भी रियलाइज होगा ना, ये भी लिखा था अभी वाले एक पॉइंट में। बहुत नॉइज आ रहा है कहीं एक्चुअली से। एक्चुअली प्रभु बात यह है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, आप देख लीजिए अपने चारों ओर भी देखेंगे ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं, और मेरे को तो लगता है कि मोर और लेस वो एक्टिंग करते हैं, मतलब खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होता नहीं है, बाहर एक कवरिंग चढ़ा के घूमते रहते हैं बस। ये हम क्यों उनका बहुत जो ब्लास्फेम करें? देखिए इसका एक हाँ ये नहीं करना चाहिए। एक नजरिया ऐसा होता है, जैसे एक चैनल होता है, तुकाराम प्रभु एक बार बता रहे थे कि मान लीजिए हमने किसी में कोई फॉल्ट देखा, या हमको लग रहा है कोई गलत राह पे है, या किसी को कुछ करेक्शन चाहिए, और वो हमसे सीनियर है या हमारे इक्वल हैं, या किसी तरीके से हमसे उतना ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए कि मान लीजिए आपके भैया हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे सीनियर हो रहे हैं, वो इनिशिएटेड भी हैं, एज में भी बड़े हैं, सब तरीके से वो बड़े हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके जो जो भी उनके काउंसलर हैं, जो भी अगर हम उनको जानते हैं या और भी है, तो हम उनको बहुत ही हम्बल वे में एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्रभु जी सच एंड सच हमने ऐसा देखा है और ये चीजें चल रही हैं, तो बहुत बहुत कृपा हो जाएगी कि आप अगर इस चीज को थोड़ा सा चेक कर देंगे उनके साथ। तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि वो इनिशिएटेड हैं और वो भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए घर में वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उनका अपने गुरु के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, और गुरु के प्रति रिस्पेक्ट होगा तो जब गुरु कुछ समझाएंगे तो वो सुनेंगे। मान लीजिए वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब अब तो बस वो जैसे तैसे ही सारी चीजें चल रही है, जैसे बीच में जगत गुरु बता रहे थे ना, इनिशिएशन ले लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर भक्ति चलती रहेगी। बहुत इनिशिएशन लेने के बाद, सन्यासी होने के बाद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। समझ, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो नोटिंग करें आपको ऐसा लग रहा है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अगर नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जनरल केस में अगर हमको लगता है कि हमने देखा, जैसे मान लीजिए आप और मैं, तो और भी हैं भक्त, तो सारे तुकाराम प्रभु की काउंसलिंग नहीं है। मान लीजिए कोई जगदगुरु प्रभु की काउंसलिंग है, कोई यूनिवर्सल प्रभु की काउंसलिंग है, और हमने देखा कि उन्होंने कोई गलती की है या उनके लाइफ में कुछ और करेक्शन की जरूरत है, तो डायरेक्टली उनको ऑफर ना करके, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हम ऑफर कर सकते हैं, लेकिन कई कई केसेस में ऐसा होता है हम डायरेक्टली ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो हम बहुत ही हम्बल वे में, जस्ट ऐसे होता है ना, जैसे टू ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ द काउंसलर, उनके नोटिस में अगर हम डाल देंगे तो उसके बाद काउंसलर उस चीज को हैंडल करेंगे, और अगर वो सबमिसिव होंगे तो काउंसलर की बात सुनेंगे, और अगर वो काउंसलर की बात ही नहीं सुने तो हमको डील करने का मतलब ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं आया उसमें। अगर कोई व्यक्ति इनिशिएटेड है, मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन अगर इनिशिएटेड है तो इनिशिएशन सिर्फ काउंसलर से मिलता है, काउंसलर के अप्रूव करने के बाद ही कोई सन्यासी इनिशिएशन देते हैं इस्कॉन में। तो अगर वो काउंसलर के प्रति शरणागत नहीं है, इसका मतलब अभी तो वो कोई चीज फॉलो नहीं करता, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक वे होता है, मतलब ये अल्टीमेट नहीं है, इतना मुझे पता है बस। एक्चुअली प्रभु ये बात है ना, हमारे घर में उसके चलते भक्ति का एक मतलब गलत इंप्रेशन आ गया है सब पे। जो लोग इस सब प्रोसेस में आते हैं ना, उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सबके लिए। आइडियल बिहेवियर रखना चाहिए। जी, और उसके चलते हुआ ये है कि एक गलत इंप्रेशन सबके ऊपर आ गया है कि ये ऐसा कर रहा है, ये बाबा जी बन गया, इसीलिए जाके ये ना इसको सम्मान देता है ना इसको सम्मान देता है, खुद में रहता है और सोचता है मैं बहुत बड़ा ये कर लिया वो कर लिया, मतलब एक गलत इंप्रेशन देता है। क्योंकि जैसे मैं अभी भी पढ़ा, जैसे शिला प्रभुपाद के लेटर में, ये शिला प्रभुपाद सब कुछ सबका ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि
ऐसे यहाँ पे कहीं पे श्रील प्रभुपाद ने बोला ना कि ना स्त्री गलत है ना माया गलत है, हमारा उनसे डीलिंग गलत है, हम उसको गलत वे में यूज कर रहे हैं। भगवान की कोई शक्ति गलत नहीं है, हम उसको गलत यूज में यूज कर रहे हैं। तो मतलब इससे वही हुआ है, वही हुआ है और क्या। तो एक गलत इम्प्रेशन आ जाता है ना, मतलब अगर आप ठीक से बिहेव नहीं करेंगे, आपका चरित्र ठीक नहीं होगा। और अपने पास्ट लाइफ में भी बहुत मतलब खराब लाइफ था उनका, तो इसीलिए मतलब जब पास्ट लाइफ इसलिए खराब मैं रहता है ना ब्रो, तो हमारा ना बहुत सारा कंडीशनिंग ऐसा रहता है जिसको ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब पता नहीं अब इस केस में कैसे मिल गया है इनिशिएशन। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है वो पता बाद नहीं में। प्रभु, एक्चुअली मैं जब उनसे मिला था, मैं जब पहली बार इस्कॉन मंदिर गया था, तो मैं जब मेरा पहला दिन भुवनेश्वर का, मैं इस्कॉन मंदिर गया था। अरे जब मैं आया था पढ़ने के लिए, जब से इंजीनियरिंग करने आया था जब भुवनेश्वर में, और मेरे को लेके भी वही गए थे। लेकिन जब मैं गया उनके साथ, तो मेरे को लगा कि इनका लाइफ बहुत खराब था पहले, अभी लेकिन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि कृष्ण भक्ति में आ गए हैं। मेरा भी ऐसे ही इंक्लिनेशन था, तो मेरा एक मतलब बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आ गया था उनके ऊपर। लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों मतलब कुछ ही महीनों के पहले पता चला, मतलब उनकी जो पत्नी है वो फोन करके रोती हैं, बोलती हैं मेरे को बहुत खराब ट्रीट करते हैं, ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं और सम्मान नहीं देते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, वो तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन यही है। किसके और ये नहीं डिसाइपल है है? कि ये हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली उन्हीं, और वो भी देखिए उनको ब्लैस्फेम कर रहे हैं, जो उनकी पत्नी है वो भी इनिशिएटेड है, तो मतलब वो भी वैष्णव अपराधी कर रहे हैं, इसका मतलब देखा जाए तो। मतलब किसके डिसाइपल है, आप बता पाएंगे? डिसाइपल का मैं उनको नहीं पूछा, लेकिन वो इनिशिएटेड हैं। और पता नहीं उनके गुरु महाराज के बारे में मेरे को नहीं पता है। एक्चुअली ना ये चीज अच्छा बहुत बहुत कुछ के प्रॉब्लम बता करती अच्छा, सकते है। हैं। ये बता सकते हैं मतलब मैरिज का मतलब कितना, मतलब उनके विवाह हुए कितना समय हो गया होगा? बहुत हो गया है अभी, करीबन मतलब कितने साल? 10-12 साल। ओके। मतलब कभी कभी जैसे जैसे नॉर्मल हम देखते हैं जो कर्मी लोग होते हैं प्रभु,